We started. Let us invoke together to the Supreme God, to the Great Divine Father and the Great Divine Mother. Thank you for your priceless blessings, for your divine light, divine love, divine power, divine healing, guidance, mercy, help, and protection. We thank you. To our great spiritual teacher, to all the great spiritual teachers, to all the great gods and goddesses, to all the great ones, we very humbly thank you for your great blessings. Thank you so much. To the great Swami Rama, to his great spiritual teacher, we very humbly invoke your blessings. Thank you for helping us deeply understand the value of spiritual life. May we live it to the best of our capacity and may we continue to improve ourselves on this path. We thank you in full faith. So be it. Thank you. Anyways, good morning again. So अभी हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत बढ़िया स्टडी जिसका नाम है लिविंग विद हिमालयन मास्टर्स. ऑलराइट, हमको आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है जिसका नाम है माय मास्टर एंड द प्रिंस स्वामी. ऑलराइट, my master is known throughout India because of this historical event which I'm going to relate. Apparently, many Indian lawyers, judges, and other educated people already know of it. There was a young man named Bhaval Sannyasi who was the heir prince of Bhaval, a state in Bengal. After his marriage, he spent most of his time with his wife in his luxurious mountain resort at Darjeeling. His wife was already in love with a doctor, and the two lovers conspired to poison the prince. The doctor started giving him cobra venom injections in very small dosages. The prince was told the injections were vitamins. The doctor slowly increased the dosages, and one day, after 2 months, the prince was declared dead. A huge procession carried his body to a cremation spot situated at the edge of a mountain stream. At the point where piles of wood had been ignited and the body placed over the fire, torrents of rain began to fall. Darjeeling is noted for the highest rainfall in the world. The fire was extinguished by the torrents of rain, and the stream flooded over and swept the body away. 3 miles downstream from the cremation site, my master was staying in a cave with some of his student swamis. He was in the process of traveling from the foot mountains of Kanchenjunga to our cave in the Kumayu Himalayas. When he saw the body tied with coffin cloth and bamboo sticks rushing down the stream towards him, he instructed his students to pull it out of the current and release it from the well-tied ropes. He said, "This man is not dead, but is in deep unconscious state without normal breath and pulsation. He is my disciple." Wow, that's amazing. They untied the ropes and brought the body before him. Within 2 hours, the prince recovered his normal senses, but he completely forgot his past. He became a disciple of my master and was later initiated as a renunciate. He lived with my master for 7 years. Then my master asked him to visit different places and meet other sages. He predicted that this Prince Swami would meet his sister and would recall his past. My master said, "There are going to be a lot of problems for us, so I better leave for higher altitudes." He went to our ancestral cave in the Himalayas and stayed there for several years. After wandering several months in the plains and meeting many sages, one day the Prince Swami unknowingly went to his sister's house to beg alms, and she immediately recognized him. It took him 6 hours to remember everything from the past. I was young at the time and remember accurately the details of the whole incident as they were reported. Influenced by the promptings of his family and remembering his past, the Prince Swami went to the court and claimed to be the Prince of Bhaval.
Numerous witnesses were called to testify for both sides of the case. During court proceedings, it was proven that the doctor had obtained snake venom from a laboratory in Bombay. And it was proven beyond a doubt that the Swami was a prince who had been poisoned by his wife and her doctor boyfriend. The Prince Swami told how he had been declared dead, his body carried to the cremation site near Darjeeling, swept away by a flood, and then picked up by a master of the Himalayas and his disciples. My master did not go to court, but sent two Swamis to serve as witnesses. The case continued in Calcutta court for several years and was one of the longest and largest cases tried with the history of Indian judiciary. The prince eventually regained possession of his property and wealth, but ironically, he died a year later. Wow. तो आपको स्टोरी समझ तो आई गई होगी. सिंपल स्टोरी है कि कि देयर वाज अ प्रिंस जो कि उसकी शादी अभी भी हुई थी, तो ही वुड स्पेंड लॉट ऑफ टाइम अपनी वाइफ के साथ. एंड उसकी वाइफ एक डॉक्टर से प्यार करती थी. एंड उन दोनों ने एक कंस्पिरेसी बनाई कि कैसे इस प्रिंस को मतलब लुढ़का दिया जाए. ठीक है. और जैसी जैसी मतलब प्रिंस जो है वो खुद से वो लोग वेनम देने लग गए, बहुत स्मॉल डोजेज में, फिर इंक्रीजिंग डोजेजेस में. और एक टाइम ऐसा आया कि प्रिंस की सांसें चलना बंद हो गई. तो ही बेसिकली वॉज डिक्लेयर्ड मेडिकली डेड. उसको क्रिमेशन साइट पे ले गए, वहाँ उसकी बॉडी जो है बह गई वहाँ पे. इट swam across and सो उसकी जब वहाँ बॉडी बह गई, जब बारिश वारिश आ गई वहाँ पे, एंड तो स्वामी जी को बॉडी मिल गई इनकी. जो जो स्वामी जी जो थे वो स्वामी रामा के टीचर थे. जब उनको बॉडी मिल गई तो उन्होंने जो है इस बॉडी को 2 घंटे में रिकवर करवा के, मतलब एंड देन ही वाज लाइक कि ना तुम मेरे स्टूडेंट बन जाओ. उनको मालूम था कि ये इनके डिसाइपल हैं और ऐसा ऐसा है, मरे नहीं हुए हैं. तो इन्होंने जो है प्रॉपरली इनको 7 ईयर्स तक ट्रेन किया, अलग अलग स्टेजेस के पास भेजा. एंड एक टाइम ऐसा आया कि जब ये मतलब सबसे मिल गया, मतलब व्हेन ही मेट एवरीवन एंड ही वाज फाइन, तब ही अपनी बहन से जाके मिल गए. ये सब इनके गुरुजी को मालूम था कि ये होने वाला है सारा का सारा. ये था कि मैं नीचे नहीं जाऊंगा, जब कोई प्रॉब्लम आएगी तो आई विल सेंड माय डिसाइपल्स करके. एंड हुआ वैसा. एक मतलब जब बहन ने पहचान लिया, उसके बाद इन लोगों ने कोर्ट केसेस में अपना वो किया कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, उसकी नहीं है करके ना इन्होंने मुझे मारा है. कोर्ट वाले प्रोसीडिंग में बहुत कुछ प्रूव हो गया. इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, दो साइड से टेस्टिमनीज आई वगैरह वगैरह. एंड इट वाज अ विक्ट्री फॉर हिम आफ्टर सेवरल इयर्स ऑफ कोर्स. बट उसके 1 साल के बाद उनकी मृत्यु हो गई. सो kind of anyways, let's go ahead for now. Though through this case my master became known all over the country and people started searching for him. He has always avoided crowds and worked only with a chosen group of students to whom he provided constant and loving guidance. My master did not want to come into limelight. Many times the people of India wondered who this great sage was, but my master preferred to remain away from the crowds. He still prefers to remain unknown and says the aspirant who genuinely wishes to follow the path of enlightenment should avoid the crowds, publicity, and creating large followings. Impressive, no? कितना अच्छा लिखा है कि an aspirant who genuinely wishes to follow the path of enlightenment should avoid crowds, publicity, and creating large followings. This is impressive, actually. Name and fame are the greatest barriers and downfalls for a spiritual man. Even after renouncing worldly possessions, the desire to earn name and fame lurks in the unconscious mind.
An aspirant should wash off this desire completely by dedicating his body, mind, and the soul to the Lord, and by having no personal desires whatsoever. Such a sage can help in and guide humanity even from a quiet and isolated corner of the Himalayas. अभी ये तरीका कैसे है अपने को पता नहीं आज, बट कोई ना कोई तरीका होगा जिससे कि a person who has completely released all desire of name and fame also, वो व्यक्ति जो है एक कहीं दूर दराज के एरिया में बैठ के ह्यूमैनिटी को गाइड कर सकता है। ये तरीका कैसे है अपने को पता नहीं है, बट serving humanity becomes an important part of life for such sages. They do not expect anything from humanity, for they think that serving humanity is the expression of love for God. इसीलिए हम कभी कभी सोचते हैं कि जो है सेंट्स जो होते हैं वो वहां पे क्या बोलते हैं, वो गुफाओं में बैठे रहते हैं और वहां पे कुछ काम धंधा करते नहीं हैं, उन्हें कैसे एनलाइटमेंट मिल जाता है। बट आइडियली कुछ तो होगा जो वहाँ पे वो ह्यूमैनिटी को सर्विस के फॉर्म में करते होंगे। इट्स वेरी लाइकली एक्चुअली कुछ तो पक्का करते होंगे। क्या करते हैं वो एग्जैक्टली नहीं पता, अभी एग्जैक्टली नहीं पता, कुछ तो पक्का करते होंगे। जैसे कि हम एक चीज़ का एक्सपेरिमेंट करते हैं अभी। आप लोगों में से जितने लोगों को भी स्कैनिंग आती है अपने सिस्टम में, ट्रुथ का एनर्जी एक बार स्कैन कीजिए। ट्रुथ, ट्रुथ। और कितना स्ट्रांग आ रहा है वो एक बार स्कैन कीजिए। थोड़ा थोड़ा सा है एनर्जी, पर ठीक ठाक भी है, मतलब ऐसा कोई बहुत भी कम नहीं है, बहुत भी ज्यादा नहीं है, बट है। ठीक है, लेट्स एक्सपेरिमेंट समथिंग आज। एवरीवन जस्ट जस्ट एक बार सब अपनी आंखें थोड़ा बंद करके सिट विद बैक स्ट्रेट। ठीक है, बैक स्ट्रेट। अब ये अपने ऑरा में एनर्जी ऑफ ट्रुथ को एक बार स्कैन कीजिए प्लीज। अभी स्ट्रांग आता है? अभी कितना आता है? राइट, थैंक यू। एक्चुअली सो इससे क्या होता है, इससे हमें ये सीखने के लिए मिलता है एक्चुअली कि एक तरीके से देखा जाए तो ह्यूमन डेवलपमेंट, रियल ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो खाली टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं होता है। वो जो होता है डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटीज या वर्च्यूज पे होता है। सो आप ये मान लीजिए कि अगर मैं किसी केव में बैठा हूँ एंड आप मतलब सपोज रिप्रेजेंट द ह्यूमैनिटी, तो एक तरीका ये हुआ हेल्प करने का कि स्लोली 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 द इन्फ्लुएंस ऑफ दी, ये जो है जो भी एनर्जीज हैं, ये
क्वालिटी प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं एक्चुअली। अगर आपके सिस्टम में ट्रूथ की एनर्जी ज़्यादा होगी तो इट्स वेरी लाइकली कि जब कोई सिचुएशन आएगी तो आप सच बोल दोगे, सच बोलना सीख जाओगे एक्चुअली। सो इट वर्क्स प्रोबेबली लाइक दैट। सो एक तरीका ये हो सकता है। फुटप्रिंट्स ऑफ डिल्यूजन। Westerners have been hearing many stories about the existence of Yetis, snowmen, and Shangri-La. Although these stories are based on fantasies and fallacies, curiosity mongers from the West are drawn by them and have tried to search the secret Himalayas. They are helped by the community of Sherpa porters who are traditionally trained to climb the mountains and who earn their living by guiding these travelers to the various mountains of Himalayas. These Sherpa guides have knowledge of the prominent mountain peaks and are very helpful in guiding the climbers and expeditioners. But they have no knowledge of the spiritual tradition of any part of the Himalayas. But they have no knowledge of the spiritual tradition of any part of Himalayas. मतलब वो खाली फिजिकल माउंटेन को जानते हैं बट स्पिरिचुअल ट्रेडिशन का कोई भी आइडिया नहीं है उनको. Many foreigners have gone to these mountains in search of Shangri-La, but Shangri-La does not exist in reality. The myth of Shangri-La is based on the existence of two ancient cave monasteries hidden in the Himalayas. These caves are described in our traditional scriptures and have a long heritage of meditation and spiritual practices. One is situated on the Mount of Kanchenjunga at the height of 14,000 feet, and the other, where I lived, is in the deep Himalayas on the borders of Tibet and Garhwal. This cave monastery accommodates many practitioners comfortably. It is situated at a height between 11,500 and 12,000 feet above sea level. Very few people have been to this place. This monastery still exists, and there are many Sanskrit, Tibetan, and Sandhya Bhasha manuscripts preserved there. Foreigners do Foreigners go to the Himalayas, and especially to Darjeeling, to climb these mountains with the help of Sherpas. During their expedition, they talk and think of Shangri-La and Yetis. They carry cameras, tents, respirators, and tinned foods, and even litter some of the places in the Himalayas. But there is an unknown part of the Himalayas, and those who are not prepared and who cling to their lives should not make an attempt to go there. Wow, this is interesting. I once met a rich man from the West, along with a team of Indians who were in search of snowmen. I could not convince him that the so-called Yetis or snowmen did not exist, and they spent 4 months and $33,000. जब ये बुक की गई तो उस टाइम पे इस मनी की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी. In search of them. But they returned to Delhi disappointed. This rich American wanted to film a Yeti and even publish a photograph of a Nepalese sadhu, calling that sadhu a snowman. मतलब वो येटी की फोटोग्राफ नहीं मिली. अब मैं दिखाता हूँ कि येटी क्या होता है. पहली बात तो आपको पता होना चाहिए. येटी को स्नोमैन जब बोला जाता है तो येटी दिखने में ऐसा होता है. ये स्नोमैन टाइप का होता है, इस तरीके का स्नोमैन टाइप का होता है येटी. समथिंग लाइक दिस. या समथिंग लाइक दिस. ये येटी की का एक डिस्क्रिप्शन है कि मतलब इस तरीके का होता है येटी. सो या येटी भी एक मूवी भी बन के आई थी. एनीवेज. सो लोग वेस्टर्नर्स इनको ढूंढने आते हैं, पर बाद में जब ये लोग नहीं, मतलब ये चीज़ें जब नहीं मिलती हैं तो दे बेसिकली गो एम्प्टी हैंडेड. एंड वेल यू नो. ओके. तो जो एक्चुअली जो शंग्रीला जो है वो दो एंशियंट केव मोनास्ट्रीज पे बेस्ड है. दो. एक जो है
वो है 14,000 फीट की ऊंचाई पे, माउंटेन कंचनजंगा पर। दूसरी जो है वो 11,500 से 12,000 फीट की ऊंचाई पे है, जहाँ पे ये खुद मेडिटेशन किया करते थे। यहाँ पे जो है वो बहुत सारे मॉन्क्स एकोमोडेट किए किए जा सकते हैं। और उसमें संस्कृत, टिबेटियन और संध्या भाषा का मतलब है वो भाषा जो कि एनलाइटन लोग बोलते हैं। उनके मैन्युस्क्रिप्ट्स में यहाँ पे प्रिजर्व किए गए हैं। सो रिच अमेरिकन जो आया था, उसने उसको येटी तब से उसको नहीं मिला येटी, बट उसने जो है एक नेपाली साधु की फोटोग्राफ को प्रिंट करके बोल दिया कि ये जो है स्नोमैन था वहाँ का, या फिर ये वहाँ का येटी था। I also met a Western woman with two Sherpa guides in Sikkim. She was suffering from severe frostbite. She said her mission in life was to search for snowmen. She stayed in Darjeeling and made 3 attempts to find a snowman, but she never found one. Though I have been roving in the Himalayas since my childhood, I have never met a snowman. But I have often heard stories of them. Grandmothers in the Himalayan villages tell such stories to their grandchildren. The story of the snowman is as ancient as the human's ability to fantasize. In the deep snows, one's vision becomes blurred, and white bears, which are rarely seen in the mountains, are mistaken for snowmen in the distance. These bears live high in the mountains and steal food of expeditioners. They leave long footprints which are similar to those of human beings. Interesting. The word yeti is misused for snowman. It is a Sanskrit word which means a renunciate, an austere person, and is the name of a group of renunciate sadhus who belong to one of the orders of Shankaracharya. Let us again see this. The word yeti or yeti is misused for snowman. Yeti का actual मतलब क्या है? It is a Sanskrit word which means a renunciate, an austere person, and is the name of a group of renunciate sadhus who belong to one of the orders of Shankaracharya, Yeti, right? How strange to use this word for a snowman. Yetis are human beings and not snowmen. Not bad. This is a good explanation, yeah. येती जो है वो साधुस के लिए, जो कि शंकराचार्य के फॉलोअर्स हैं, उनके लिए यूज किया जाता है। नाइस। The human mind remains under the influence of delusion until ignorance is completely dispelled. If there is no clarity of mind, the data that is gathered together from the external world is not perceived in a coordinated manner. And the clouded mind, and the clouded mind, uh, and the clouded mind conceives of false vision. This is one of the modifications of mind, like fantasy, symbol, and ideas. Maya is a cosmic illusion, and avidya is individual ignorance, which comes from a lack of knowledge about objects and their nature. It is also an illusion. Story of the Bigfoot is based on the belief of a fantasy and coordinated perception. When a bear runs fast in the snow, climbs upwards or downwards, the size of the foot of the bear looks very large. When I had a pet bear, I was myself surprised to see the big footprint it created. It is usually large and similar to the human foot. Wow. Alas, the world under the influence of illusion is still searching for the shadows and the large foot. I call it the Himalayan Maya. I was born and lived in the mountains, and I have nothing to say to those who are delighted to believe in these myths and who are still searching for something which never existed. God help those misguided souls. These are not the footprints of snowmen or yetis, but of delusion. ये ना एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है एक्चुअली। अगर हम इस एग्जाम्पल को ढंग से पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि
येटी जो है एक कहानियों का फिगमेंट है एक्चुअली, जिसने कि इमेजिनेशन में एक 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 रियल चीज क्रिएट कर दी है अपने मन के अंदर, एक एक्चुअल चीज को क्रिएट कर दिया है, और हम उसी चीज के पीछे भागे जा रहे हैं। लाइफ में भी हम मतलब कभी कभी क्या लगता है कि पैसा पैसा आ जाएगा, बहुत पैसा आ जाएगा तो लाइफ अच्छी बन जाएगी। ये एक सोच में एक एक थॉट है इस तरह का, जैसे कि लोगों के दिमाग में येटी का थॉट है, और ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, महीनों महीनों उसमें बर्बाद करते हैं। इस एक्चुअल लाइफ में हम सालों सालों बर्बाद कर देते हैं एक्चुअली। सुख नहीं मिलता जो कि एक्चुअली जो सोचा था उस तरीके से, क्योंकि उसमें सुख नहीं है। उसमें एक्चुअली क्या होता है ना, आप सबको पता ही होगा एक्चुअली कि हमको जो बहुत चीज चाहिए होती है ना, उसका जो सुख होता है, और या उसका जो प्लेजर होता है, वो केवल कुछ क्षण तक रहता है, सिर्फ कुछ मोमेंट्स तक बस रहता है। रहता है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं रहता, बहुत थोड़े समय तक रहता है बस। और कुछ आपकी लाइफ में कुछ खराब हुआ, और फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आपको आज $10 मिलियन मिल जाए आज के आज ही आपके अकाउंट में, कोई टैक्स ना हो उसके ऊपर, यू विल बी सुपर हैप्पी एक्चुअली। यू विल बी डांसिंग अराउंड, यू विल बी, चलो ये करते हैं, चलो लेट्स प्लान टू गो टू दिस कंट्री, दैट कंट्री, कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे, ठीक है। अगर आपको ये भी मालूम हो जाए कि भैया कल आप मरने वाले हो, तो $10 मिलियन का सोच दिमाग में भी नहीं आएगा एक्चुअली उसके बाद। यू सी व्हाट टेक्स अ प्रेसिडेंस, वो $10 मिलियन भी आपको लाइफ 4 दिन की और भी दे नहीं सकते, तो तो मतलब यू सी कि उसकी वैल्यू ही कितनी है, उसकी कितनी वैल्यू है उसकी। इसी सिमिलरली हियर, लाइफ में बहुत सारी चीजें ढूंढ रहे होते हैं, पर वो इवेंचुअली उस प्लेजर देती है, पर थोड़ी देर के लिए देती है बस, उससे ज्यादा देर के लिए नहीं दे सकती है एक्चुअली, क्योंकि वो डिजाइन नहीं है। बट हाँ, कुछ चीजें होती हैं जो कि प्रोलॉन्ग्ड फीलिंग ऑफ बीइंग अ ह्यूमन देती हैं, वो होती हैं जैसे कि सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन या फिर सेंस ऑफ सर्विस। जैसे कि गुरुद्वारे में मैंने जब जाके देखा कि जो लोग जो वहाँ पे रोज सुबह आते हैं, एंड दे लंगर बनाने के लिए जो पूरा दे स्क्रैप द वेजिटेबल्स प्रॉपरली, एंड वो पूरे जो खाना वाना बनाने में हेल्प करते हैं, सुबह 3 बजे 2 बजे के आए हुए होते हैं, एंड दे कीप वर्किंग, वो हर तरीके से, मतलब प्लेट साफ करना हो गया, वो एरिया क्लीन करना हो गया, ये सब वॉलंटियर रन होता है, राइट। सो and they're very joyful people actually inside out, very joyful people, because क्या होता है कि एक्ट ऑफ सर्विस के अंदर आपकी सोल को एम्पावर किया जा रहा होता है, एक्ट ऑफ सर्विस के अंदर। दैट एम्पावरमेंट, वो जो एम्पावरमेंट होती है, वो आपके साथ बहुत लंबे समय तक रहती है, इसलिए आपको बार बार सर्विस करने का मन करता है। अगर आप किसी से पूछोगे कि जो है, जो भी मतलब कोई भी किसी भी फील्ड ऑफ सर्विस में होगा, मतलब जैसे कि कुछ लोग जो होते हैं वो डोनेशन कलेक्ट करते हैं ताकि प्रॉपर जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा सके। कुछ जो होते हैं वो डोनेशन कलेक्ट करते हैं ताकि बच्चों का ट्रीटमेंट हो सके। कुछ जो होते हैं उन्होंने अपने घरों के आगे मतलब एक ब्लाइंड्स के लिए स्कूल खोला हुआ है, बहुत सारे लोग होते हैं इस तरह के। कुछ जो होते हैं प्राणिक हीलिंग सर्कल में, जो कि फ्री हीलिंग्स करते हैं एक्चुअली। इफ यू रियली रियली सी, कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो कि मतलब एक किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके व्हील चेयर्स को डोनेट करते हैं, 300-400 व्हील चेयर को डोनेट करते हैं एक्चुअली। वो जितनी खुशी मिलती है उससे, वो खुशी बयान नहीं की जा सकती है एक्चुअली, और वो मोमेंटरी नहीं होती है। वो खुशी इतनी होती है कि अगर आपको पता है कि आपकी जान कल चली भी जाए तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आपके अंदर ना वो पर्सनल वाली हैप्पीनेस नहीं है, वो जॉय है, जॉय ऑफ लिविंग है कि आपने अच्छे से जिया, ये वो होती है, और उसे टर्न डाउन नहीं की जा सकती। दैट इज वेरी वेरी पावरफुल एक्चुअली स्पीकिंग, इन सेंस एक्सट्रीमली पावरफुल। सो इफ यू आस्क मी, देन आई विल टेल यू कि द रियल हैप्पीनेस ऑफ लाइफ वो
अपने लिए कुछ करके नहीं है, वो रियल हैप्पीनेस दूसरों के लिए कुछ करके ही है, इनएविटेबली दूसरों के लिए कुछ करके ही है। अब इंटरेस्टिंगली, हमारे इंडियन फैमिली सोसाइटी में अगर आपने देखा होगा कि माँ जो है अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती है, अपने बेटे अपनी बेटी के लिए कुछ भी करती है, कुछ भी कर सकती है एक्चुअली। ये जो होता है, इसको बोल ये एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन है कि दूसरे की खुशी में मेरी खुशी है। मेरे बच्चे अच्छे से खाना खा ले, अच्छे से सो जाए, अच्छी इसकी तबीयत अच्छी रहे, अच्छे मार्क्स लाए, अच्छी शादी हो, अच्छा सब कुछ हो, उसकी खुशी में मेरी खुशी है। ये एक्सप्रेशन है एग्जैक्टली सेम। जब वो बड़े स्केल पे अप्लाई होता है कि मेरी सोसाइटी की खुशी में मेरी खुशी है, आई विल फाइट फॉर इट्स इट्स राइट्स। जब वो सेम कंट्री तक फैल जाए तो बहुत बड़े सर्कल का जाता है उसके बाद, समडे वो वर्ल्ड तक फैल जाता है एक्चुअली। ठीक है, आगे चलते हैं। हाउ वी लिव इन द केव्स। दोज हु आर रियली कमिटेड टू लिव a life of austerity can live conveniently in certain parts of the Himalayas, where there are small caves to accommodate 4 to 5 people. There are also a few cave monasteries in the Himalayas, in which the traditions are unbroken. The monastery in which I grew up is one of these. In our cave monastery, the tradition goes back 4 or 5 thousand years. My God. Lord Buddha के भी पहले, and it is well remembered. We have records of those who the first masters were and how the tradition began. Our cave monastery is a natural cave with many compartments. Over the centuries, the rocks have been slowly carved away to enlarge it more and more so that it can accommodate many students. Generations of dwellers have worked to make the cave comfortable and peaceful, but it is not very modern. There are no bathrooms, kitchens, or other conveniences, and yet the monasteries function very well. For light inside the cave, there is a stick of incense called dhoop, which is made of herbs. When it burns, it gives light, and when it is extinguished, it gives fragrance. Dhoop is crushed raw and then made 4 inches long and 1 inch thick. It burns well, and one can read the scriptures in its soothing light. When it is extinguished, it gives fragrance and works like the incense. Branches of pine and deodar trees are also useful for making good torches. They both have natural resin, which helps them to burn without any difficulty. The cave is kept quite warm by the dhuni, a fire which is never extinguished. This fire is constantly supported by huge wooden logs and is regularly and vigilantly fed additional fuel. Sufficient fuel wood is collected in the summer for winter use. Nutritious vegetables are also grown during the summer on the banks of nearby streams. Varieties of mushrooms and lingora and ogal are two common vegetables which grow wild and are also used there. There are several varieties of roots. Two are called tarur and ginti. Others look and taste like sweet potatoes. In our cave, we live comfortably on barley, potatoes, wheat, gram, corn, which is grown up to 6,500 feet in the mountain villages. Every village mountain, a cottage industry which produces high quality woolen blankets, carpets, and warm clothes. A narrow perennial stream of water flows from our mountain cave. During November and December, when the water freezes, we simply melt the snow. In other caves where I have lived, such as the cave in Manali, fresh water is not easily available. We would fetch the water from a distance of 3 to 4 miles. Wow.
There are certain hermitages where masters still teach their students in the ancient manner. There, the teachers live in a natural cave, and the disciples come from various places to study and practice with him. Most would-be students do not reach these caves. However, for there is something about the Himalayas which protects the teachers from those who are merely curious or who are not prepared for the higher teachings. If one leaves his home and starts searching for a teacher only because of curiosity for the higher teachings, only because of curiosity or emotional problems, he will not reach these higher elevations. He will not have the intense determination and drive required to go into those places hidden deep in the Himalayas where the great sages dwell. Wow, wow, kya baat hai. Nanda Devi is among the most spectacular peaks in the Himalayan range. Nanda Devi. Nanda Devi. Teaching is often done by demonstration and goes on at a certain fixed times. The students are then asked to show their own progress by demonstrating their skill. Sometimes the teaching is done in silence, and when a certain level of attainment is reached, the teachers ask, how will you learn from other yogis if you spend your whole life in a cave? Consequently, most of the students leave after a few years. It is important to make one's life creative and helpful. But before doing so, one should make contact with his own potentials deep within by disciplining himself and gaining control over his mind, speech, and action. If discipline such as that taught in the cave monasteries is practiced even for a few years, the flowers of life will bloom forever. A person who has gained such self mastery lives in the world and yet remains above it, unaffected by the worldly fetters and problems. So सिंपल सिंपल सी चीजें हैं वो कीव में रह पाते हैं ये लोग क्योंकि केव को गर्म करने के लिए दे यूज वुड जो कि उन्होंने गर्मी में इकट्ठा की होगी उसको विंटर में दे कीप बर्निंग सेकंड थिंग इज कि लाइट के लिए वो धूप जलाते हैं और जो फायर होती है उसको बोलते हैं धुनी और धूप की जो है लाइट भी आती है और अच्छी फ्रेगनेंस भी आती है एक्चुअली उससे और ब्लैंकेट्स वगैरह जो है वो आस पड़ोस के जो विलेजेस होते हैं वहां पे मिल जाते हैं अभी वाली केव के पास फ्रेश वाटर का स्ट्रीम भी था तो वहां से पानी भी मिल जाता था इनको थोड़ा स्नो मेल्ट करके पानी मिल जाता था इनको वो केव जो है एक लिमिटेड साइज की थी तो केव को थोड़ा खोद खोद के उन्होंने अंदर से नॉन मॉडर्न तरीके से डिग किया था कि केव की हिस्ट्री जो है वो तकरीबन 5,000 साल पुरानी है एक्चुअली अप्रोक्सीमेटली एंड ऑलमोस्ट जो भी स्टूडेंट है सबको सबको याद है वो वाली ये भी है कि एक टाइम के बाद जो है वो टीचर्स ये बोलते हैं अपने स्टूडेंट से कि तुम कब तक केव में रहोगे या जाके बाकी से भी मतलब पढ़ के आओ तो वेल दे वुड डू दैट मोर इम्पोर्टेंट क्या है कि वो तब तक एटलीस्ट कुछ सालों तक अपने स्टूडेंट्स को अपने पास रखते हैं जहाँ पे कि वो बिना वर्बलाइज किए अंदर से इंस्ट्रक्शन ले लें टेलीपैथिक इंस्ट्रक्शन क्लियरली ले लें और उसको प्रैक्टिस करें अपनी स्किल में दिखाएं एक्चुअली एंड दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी गुड अगर उन्होंने टेलीपैथिक इंस्ट्रक्शन को प्रॉपर्ली ऑब्जर्व किया दे कैन लर्न फ्रॉम एनीबडी इन द होल वर्ल्ड टेलीपैथिक इंटरप्ले बोलते हैं ना इसको मास्टर और स्टूडेंट के बीच में इस वर्ड को टेलीपैथिक इंटरप्ले उसमें क्या होता है कि मास्टर कुछ नहीं भी बोलता है या मतलब वर्बली नहीं बोलता है बट मास्टर कैन टीच जैसे कि एक बार क्या हुआ था कि प्राणिक हीलिंग के एक मतलब एक देर इज सीनियर इंस्ट्रक्टर उनका नाम है हेक्टर और हम उनको मतलब आचार्य हेक्टर बोलते हैं वो हमारे स्पिरिचुअल टीचर के स्टूडेंट हैं एक्चुअली तो जब आचार्य हेक्टर जब एज में छोटे थे मतलब when he was about 18 or 20 years old उस टाइम की बात है उस टाइम पे प्राणिक हीलिंग वो ही वुड डू हीलिंग्स उस टाइम पे ही उस टाइम से ही एक्चुअली एंड तो मास्टर चो ने मतलब हमारे जो स्पिरिचुअल टीचर है उन्होंने ही वुड टीच हिम न्यू न्यू टेक्निक्स एक्चुअली
कि चलो ये ट्राई करो, ये ट्राई करो, वो ट्राई करो, वो ट्राई करो करके ना ऐसे। तो एक बार क्या हुआ कि मास्टर हेक्टर जो है आके बोलते हैं कि मास्टर जो आई लर्न दिस न्यू टेक्निक ऑल बाय माई सेल्फ, ऐसे करे, ऐसे करे, ऐसे करे। एंड ही वाज लाइक, हे हेक्टर, आई हैव बीन ट्राइंग टू ट्रांसमिट दिस टू यू फॉर सो मेनी मंथ्स नाउ, यू आर स्लो। सो हमें टेलीपैथिकली मास्टर चो जो है वो मास्टर हेक्टर को एक टेक्निक ट्रांसमिट कर रहे थे मंथ से, महीनों महीनों से एक्चुअली। तो बोलते तुमने अब जाके पकड़ा, तुम बहुत स्लो हुआ है, तो you should be better. So this is also the way the great teachers teach the students. कभी कभी जब आप I think this is good enough for you to understand कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं अभी। आगे चलते हैं। The master, second chapter, the second section starts on the master teaches. Young age is the budding period of the flower of life. It needs protection so that the diverse opinions of others do not create confusion in the mind. A tender mind can be bent easily. Loving guidance and right communication is important. See, loving guidance and right communication is important. Parents who pay proper attention to their children can help them to pass through adolescent period. This is a period of shaping the habits of mind. Learning to give. Nearly all children are quite selfish by nature. They do not want to give anything to others. I was trained to reverse this tendency. On the mountains, I used to take only one meal a day. I would have one chapati, some vegetables, and a glass of milk. One day, when it was almost 1 o'clock, I washed my hands, sat down, and food was given to me. I said grace and was about to start eating when my master came in and said, wait. I asked, what is the matter? He answered, an old Swami has come. He is hungry and you must give him your food. No, I'm not going to, even if he's a Swami. I'm also hungry and I won't get any more food until tomorrow. He said, you won't die. Give it to him. But don't give it just because I'm ordering you. Give it as an offering of love. I said, I'm hungry. How can I feel love towards someone who's eating my food? When he could not convince me to offer my food, to the Swami, he finally said, I order you to offer your food. The Swami came in. He was an old man with a white beard, with only a blanket, a walking stick, and wooden sandals. He traveled all alone in the mountains. My master said to him, I am so glad that you have come. Will you bless this child for me? But I said, I don't need your blessing. I need food. I'm hungry. My master said, if you lose control in the weak moment, you will lose the battle of life. Again, let's see this. My spiritual teacher bolte hain, if you lose control in this weak moment, you will lose the battle of life. Please offer your food to the Swami. First give him water and then wash his feet. I did as I was told, but I did not like it, nor did I understand the meaning of it. I helped him wash his feet. Then I asked him to sit down and I gave him my food. Later, I found out that he had not any food for 4 days. He took the food and said, God bless you. You will never feel hunger unless food comes before you. This is my blessing to you. Wow, could you see that? He took the food and said, God bless you. You will never feel hunger until the food comes before you. This is my blessing to you. Wow. ऐसी blessing मिल जाए भाई हमको भी. His voice still echoes in my ears. From that very day, I have been free from that urge which had so often led me to childish cravings. See, you will never feel hunger unless food comes before you. This is my blessing to you. There is a narrow barrier between selfishness and selflessness, love and hatred. After crossing it, one enjoys doing things for others.
without seeking anything in return. This is the highest of all joys and an essential step in the path of enlightenment. A selfish man can never imagine this state of realization, for he remains within the limited boundaries built by his ego. A selfless man trains his ego and uses it for higher purposes. Selflessness is one common characteristic that we find among all great men and women of the world. Nothing could be achieved without selfless service. All the rituals and knowledge of the scriptures are in vain if actions are performed without selflessness. All the rituals and knowledge of the scriptures are in vain if actions are performed without selflessness. Wow. तो हिंदी में इसका एक बार विवरण दे देते हैं। एक बार ये खाना खाने बैठे और स्वामी जी इनके जो जो स्पिरिचुअल टीचर आके बोलते हैं कि एक स्वामी जी आए हुए हैं, अपना खाना उनको दे दो। ये बोलते हैं कि मैं भूखा हूँ, मुझे कल तक कुछ खाने को नहीं मिलेगा अगर मैंने उनको दे दिया अपना खाना तो ये बोलते हैं कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम अपना खाना कल खा लेना, अभी इनको अपना खाना दे दो, ये काफी दूर से आए हैं। तो वो गुस्से में आ गए कि नहीं, मेरे को नहीं देना, मेरे को नहीं देना। सेम पे थोड़े छोटे भी थे एज में ना, तो ज़्यादा समझ थी नहीं उस टाइम पे। फिर जब ये माने नहीं तो इनके गुरु जी ने बोल दिया कि मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि खाना अपना दे दो इनको। तब उसके बाद तो फिर क्या ही बोलना है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, फिर तो दे दिया अपना खाना। और अम, ऐसा हुआ कि जब खाना इनको मिल गया, जब खाना दे दिया गया इनको, तो उसके बाद फिर अम, क्या बोलते हैं कि अम, इन लोगों ने इन्होंने जो है अपना मतलब बोला कि इनके पैर धो, यू नो एंड इनका सत्कार करो स्वामी जी का। उसके बाद इनको अपना खाना दो। इन्होंने जैसा बोला वैसे इन्होंने किया। फिर खाना खिलाते खिलाते स्वामी जी ने बताया कि देखो मैंने 4 दिन से खाना नहीं खाया हुआ है। 4 दिन तो काफी टाइम होता है एक्चुअली यार। पर जब इन्होंने अपना खाना दिया इनको, तो स्वामी जी से ब्लेसिंग आई कि मैं तुम्हें ऐसी ब्लेसिंग देता हूँ कि जब तक तुम्हारे सामने खाना नहीं आएगा तब तक तुम्हें भूख नहीं लगेगी। विच आई थिंक इज अ ग्रेट ब्लेसिंग, नो, फेनोमेनल ब्लेसिंग एक्चुअली। उसके बाद आप माउंटेन में रोज मेडिटेशन करो, भूख लगेगी नहीं आपको एक्चुअली। रोज मेडिटेशन करो आप। देखिए ये सिद्धि होती है एक्चुअली, जो इसमें जो भी डिस्क्राइब्ड है, सिद्धि होती है वो। सिद्धि भी इस तरह की होती है कि their self-realized abilities can manipulate chakra and the energies एक इस तरीके से कि एक्सटर्नल सिचुएशंस को देखते हुए दी चक्रा विल वर्क इन स्पेसिफिक मैनर। अपने तो वो कर ही चुके होते हैं, दूसरों को भी कर सकते हैं अभी, समथिंग लाइक दैट। हाउ अ मास्टर टेस्ट्स हिज स्टूडेंट्स। टीचर्स often test their students. I was asked to meditate punctually at certain time. One day during this time, my master came and stood before me while I was sitting with my eyes closed. I was not very successfully meditating, or would or I would not have been conscious he was there. He said, "Get up." I did not respond. Then he asked me, "Do you hear me and know that I'm here?" I said, "Yes." He asked, "Are you meditating?" I said, "No." "Then why did you not get up?" He asked. "I was only pretending to meditate, actually, and I had been fully conscious of his presence." The teacher often does such things to test our attitudes, our honesty, and our discipline. He will tell you one secret and then whisper another to another student, saying to both, "Don't tell this to anyone." Then, rather than keep the secrets, you exchange them with one another. In this way, he finds out that you're not prepared to keep a greater secret. He says, "I told you not to tell. Why did you tell?" Teachers also impose more severe tests. Sometimes they will say, "Stand here," and they will not come back for 3 days. It may be cold and raining, but only after days do they come back and get you. They have many such tests.
A person's strength needs to be tested, often so that he learns to be self-reliant. Teachers, by testing their students, teach self-discipline and promote self-reliance. In order to gauge a student's progress, testing is important. Testing also helps students to evaluate their own progress and to uncover errors of which they may not have been consciously aware. जैसे कि क्या होता है, टीचर्स टेस्ट तो अलग अलग तरीके से अपने स्टूडेंट्स को करते हैं। टॉरकॉम के जो टीचर थे, टॉरकॉम सरादरियान के जो टीचर थे, वो इस तरीके से अपने स्टूडेंट्स को टेस्ट करते थे कि वो बोलते थे कि एक रिवेंज प्लॉट करो अपने टीचर को ओवरथ्रो करने का, अपने स्पिरिचुअल टीचर को ओवरथ्रो करने का। तो ही वुड असाइन 5 टीम्स एंड he would give them same task is how will you overthrow the teacher and become the teacher। अब वो लोग अलग अलग बढ़िया बढ़िया प्लॉट्स ले लेके आते थे कि हम ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता था कि द टीचर वुड सी कि इनकी डीप इनहेरेंट वीकनेसेस क्या है जो कि इनके प्लॉट से बाहर आती हैं। अगर कोई बोलता है कि हम टीचर का मर्डर कर देंगे तो उसमें मर्डर टेंडेंसी है, सीड्स हैं उसमें मर्डर के, तो टीचर ये प्लॉट्स देख के समझ के उनको उस हिसाब से मेडिटेशन या फिर प्यूरिफिकेशन की एक्सरसाइज को गाइड कर देते हैं। बहुत सेंसिबल एक्चुअली, अगर आप ध्यान दोगे, पावरफुल अप्रोच एक्चुअली। एंड उसका प्यूरिफिकेशन एंड तक तब होगा जबकि गुरु ब्रह्मा हो जाएंगे। गुरु ब्रह्मा देवो महेश्वरा, राइट, समथिंग। सो व्हेन द गुरु बिकम्स दैट, तो ओवरटर्निंग की तो बात आएगी नहीं कभी इसके बाद। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई थिंक द टॉलकॉम टीचर वाज ट्राइंग टू डू। अलग अलग टेस्ट इसमें दिखाए हुए हैं, वो भी होते हैं। एन ऑल नाइट जर्नी थ्रू द फॉरेस्ट। On the way to Nepal from Tanakpur, we stayed in the forest. My master said, "Let us eat something." It was 2 o'clock in the morning. He said, "Go to the shop in Tanakpur. It is 12 miles away along the forest path." There was another Swami with us. He also had a disciple. He asked my master, "Why are you sending him at night? I would not send my boy who is with me." My master said, "Be quiet. You're making him a sissy and not a Swami. I'm training this boy. He must go." Then he said to me, "Come here, son. Hold this lantern. It has enough oil. Keep matches in your pocket. Have a staff in your hand. Wear your shoes. Go to the food grain shop and get enough groceries for 3 or 4 days." I said, "Okay," and left. कोई question नहीं, कुछ नहीं. I said, "Okay," and left. Many times during that long night, tigers and snakes crossed the path in front of me. 12 miles is huge, is huge. Wow. Many times during that night, you know how much is 12 miles, guy? Uh, roughly 20 kilometers. So many times during that long night, tigers and snakes crossed the path in front of me. The grass on both sides, elephant grass, was very tall and much higher than I. I heard many noises in the grass, but I couldn't know their cause. With my small lantern, I walked 12 miles to the shop and then came back with the supplies at 7 in the morning. My master asked, "How are you?" And I began to tell him all that had happened on the way. Finally, he said, "That's enough. Let us prepare the food." Fearlessness is also an essential prerequisite for attaining enlightenment. Great are those who are always fearless. To be completely free from all fears is one step on the path of enlightenment. एक और मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। एक ग्रेट सेंट थे जिनका नाम था आजन शाह। उनका थाईलैंड में जो नाम था वो था लोंगपोर। सो आजन शाह जो है, जब थोड़े यंग या जूनियर मॉन्क थे उस टाइम पे, वो कहीं पे ट्रैवल कर रहे थे, थाईलैंड की किसी जगह पे ट्रैवल कर रहे थे, और उन्होंने ही न्यू कि जहाँ मैं आ गया हूँ वो एक सिमेट्री है। सिमेट्री का मतलब जहाँ पे लोगों को दफनाते हैं। अब उस टाइम पे तो सिमेट्री की बहुत सारी स्टोरीज थी एक्चुअली, अलग अलग स्टोरीज थी
जिसमें कि भूत ये वो सब मतलब स्ट्रांग था। और थाईलैंड जैसी जगह में तो और बहुत स्ट्रांग है एक्चुअली, वहां तो ब्लैक मैजिक भी काफी स्ट्रांग है ऑनेस्ट स्पीकिंग। तो ये उन्होंने बोला कि चलो मैं आज मैं यहीं पे मेडिटेशन अपनी अपनी करूंगा। एंड he saw somebody or something or some god knows what approaching from behind, और वो बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ था, जिस पीछे इनके बॉडी के, और बड़ी बड़ी सांसें आ रही थी। ये भी नहीं पता कि वो फिजिकल था या नॉन फिजिकल था, कुछ नहीं पता। बस उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। पूरी रात वो चीज पीछे खड़ी रही है, पता नहीं क्या था, ने पीछे मुड़ के देखा नहीं। वो बस अपने फियर पे फोकस कर कि ये फियर मुझे आज निकालना है। बाय द मॉर्निंग दैट थिंग वाज गॉन, वट एवर क्या था वो, कौन था पता नहीं क्या था, एंड दैट थिंग वाज गॉन। एंड इनकी फियर पे एक सर्टेन डिग्री ऑफ मास्टरी डेवलप हो चुकी थी बाय द मॉर्निंग। इट वर्क्स लाइक दिस इन सिचुएशंस। ठीक है, चलिए एक क्लोजिंग प्रेयर करते हैं। टू द सुप्रीम गॉड, टू द ग्रेट डिवाइन फादर एंड द ग्रेट डिवाइन मदर, thank you for your great blessings. Thank you so much to our spiritual teacher, to all the spiritual teachers, to all the great gods and goddesses, to all the great ones. We very, very humbly thank you for your great blessings. Thank you. To the great Swami Rama, to his great spiritual teachers, we thank you for your great blessings. Thank you so much. All right.